चलो आज का फर्स्ट टॉपिक है चेंजेस. वी सी सो मेनी चेंजेस अराउंड अस, राइट? तो कैसे पता लगे कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है? तो फिजिकल चेंज, जैसे यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट आप देख रहे हो, दिस इज आइस. जब आइस मेल्ट हो गई, व्हाट यू गेट फ्रॉम दैट? वी गेट वाटर, राइट? तो आइस जो था दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वाटर, और वाटर तो वाटर है ही. कोई नया चीज मिला? एनी न्यू सब्सटेंसेस फाउंड? नो, nothing new is formed. When ice changed into water, nothing new is formed. जो ice की properties थी, the same properties the water has. So nothing new is formed. Let's see another example here. Water is boiling, right? After boiling, what you get? We get vapors, or you can say steam. Steam आ रही है बाहर. तो ये जो steam बनी water से, ये form of water ही है. It is nothing new. जो water की properties थी, the same properties the vapors have. So nothing new is formed. तो इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा हमें कि जो physical changes है ना, उसमें no new substance is formed. Right? Whenever there is a change, कुछ भी नया नहीं बनता है. Now, again, now when we have water, when ice melt, we got water. तो क्या ये चेंज जो वाटर है ये परमानेंट है कि भाई अब तो आइस पिघल गई, पानी बन गया, अब इससे हमें दोबारा आइस नहीं मिलेगी? ऐसा है क्या? नहीं. कैन यू मेक आइस फ्रॉम वाटर? यस ऑफ कोर्स. फ्रीज कर दो पानी को, अगेन यू विल गेट एन आइस. सो ये जो चेंज हुआ, आइस जो मेल्ट हुई और पानी बना, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज टेम्पररी. आप उसको दोबारा आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. Same way here. In the second case, vapors can again be converted into water. कैसे? Condense कर दो vapors को, right? तो ये जो vapors बने थे थोड़ी देर के लिए, again condense किए जा सकते हैं. तो this change, these type of changes, physical changes are what? They are temporary. ये permanent नहीं होते, temporary होते हैं. अच्छा चलो एक और चीज़ देखते हैं. From ice to water. Then water to ice. Same here, from water to vapors, from vapors back to water. क्या हुआ? ये किस तरह के changes हुए? Aren't they reversible changes? Yes, of course, they are reversible changes. You can reverse the process. चलो अब देखते हैं chemical changes के क्या होते हैं. Chemical changes में milk gets converted into curd. अब देखो मिल्क और कर्ड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. तो मिल्क जब कन्वर्ट हो गया कर्ड में, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. और कर्ड की प्रॉपर्टीज जो है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मिल्क्स प्रॉपर्टी. और यहाँ देख लो दिस पेपर व्हेन बर्न्ड इट चेंजेस इनटू एशेस. एकदम डिफरेंट चीज़ बन गई. जो पेपर की प्रॉपर्टीज है एशेस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है. तो व्हाट वी कैन से अबाउट केमिकल चेंजेस, दैट इन केमिकल चेंज, इफ केमिकल चेंजेस आर occurring, that means new substance will be formed. Right? ठीक है ना? अब now let's see, are they temporary or permanent changes? Now एक बार कर्ड बन गया, अब can you get milk back from curd? नो वे. कर्ड से आप दोबारा मिल्क वापस नहीं ले सकते. सेम वे फ्रॉम एशेस, इज इट पॉसिबल टू गेट बैक द पेपर? नो. सो दीज चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस. These are permanent changes. Now, what can you say about the type? Is it reversible or irreversible? Obviously, it is irreversible. Correct? You cannot reverse the process. एक बार दही बन गया तो बन गया. You cannot get milk back from it. So let's summarize these changes. Physical changes, they are temporary. Chemical changes are permanent. Reversible, irreversible.
no new substance is formed in physical changes. But if new substance is formed, that means we are talking about chemical changes. Energy is small. Very small change of energy takes place during physical changes, whereas in chemical changes, the energy change is large. Fine. Now, this chemical changes, when it happens, what is that? When chemical change जब होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्यों होता है वो chemical change? That is due to the chemical reaction. Okay, so chemical reaction is if I have a substance A, it reacts with substance B, what I get? I get a product C. Now, what happens? We have learned in chemical changes कि ये जो नया product बना है, this is totally new product. Totally new. Its properties are different from the properties of A and B. So, this is nothing but what? This is called chemical reaction. Easy enough? Chemical reaction is the process by which two or more substances react with each other to form a new substance and with different properties. Now, have you seen chemical reactions in your day-to-day life? क्या ऐसा है कि chemical changes या chemical reactions तो सिर्फ lab में बैठ के test tubes में scientists ही करते हैं? No. There are so many examples you see every day. The first one is the digestion of food. Yes, when you eat food, you eat roti, you eat rice, pizzas and burgers. Do you think the food which you have taken in is as it is absorbed by the body? It is broken into a simpler forms. What are those simpler forms? Those simpler forms are nothing but the nutrients like carbohydrates, fats, proteins, amino acids and so on and so. Now you see the food which you have taken, it was in a solid form, bigger molecules. But the nutrients is totally a different thing. It's a micronutrients, micromolecules you can say. It is what? It's an example of chemical reaction. Respiration is another example. Respiration is continuously taking place in your body, right? So it's a chemical reaction. This process of respiration and digestion you will study in your life process chapter and we will discuss there in detail. Rusting of iron. Iron, it's of silver color, shiny silver color. But when it gets rusted, when it is kept open in air, it reacts with oxygen and water, moisture from the air. So there is a layer, this brownish layer. Can you see this brownish layer over it? This is called rusting. How it happened, how the rusting has taken place due to chemical reaction. Some chemical reaction took place with it, with the iron. Then fermentation of grapes and so on. There are so many examples, right? Okay. Now, how can we say that by looking at the thing, how will we come to know that chemical reaction has taken place? So, factors, there are some factors which will show that the reaction has taken place, the chemical reaction has taken place. First is change in the state. Change in the state means liquid to gas, correct? Like here, I'll give you an example. H2 is a gas, right? Oxygen is a gas. When they both react, what you get? Water. Water is a liquid. So now you see, when these two reacted, you got a product which is liquid. Here they were gases. So totally a new product is formed from one state to another state. So this is a chemical reaction. Now you will say that ice में भी तो water बना था, तो वहाँ क्यों physical change हुआ? उसमें इसलिए कि state तो change हुआ, but properties remained same. Ice की properties and water की properties are same. But here you see the properties of water and the properties of hydrogen and oxygen is totally different. A new substance is formed by changing the state and the properties are also different. Got it? समझ में आया? Next is change in color. Just now we see rusting of iron is the best example of chemical reaction. Evaluation of gas. अगर कोई reaction हो रहा है और gas evaluate हो रही है, मतलब gas release हो रही है, like hydrogen is released. This is a symbol for showing that the gas is evolved. Then
chemical reaction takes place. Here example is zinc. When zinc reacts with sulfuric acid, hydrogen gas is evolved. Change in temperature. Now, whitewash हर किसी के घर में होता है. White color का quicklime, वो लोग बोलते हैं ना पानी में. That is what is quicklime, CaO. Quicklime in a beaker, add water to it. After some time, if you touch this beaker, you will feel the change in temperature. वो गर्म हो जाएगा, हाथ लगाओगे, you will feel that गर्मी there. So, that is change in, that means something happened. What happened? Chemical reaction. Formation of precipitation. Formation of, what is precipitation? Precipitation is a cloudy-like substance formed when two elements react, and that is insoluble in water. For example, here, lead nitrate. This example is from your NCERT. Lead nitrate. Lead nitrate. Okay? Now, when lead nitrate reacts with potassium iodide, lead iodide is formed plus potassium nitrate is we get as a product. And this lead iodide which is formed is yellow colored, whereas these two were of white color. This is yellow color and it is PPT, means in a test tube, a cloudy like substance will be settling down. And it is PPT, that is precipitation is always insoluble in water. So by these factors, we can say that chemical reaction has taken place. Fine? Okay. Now, we know what is chemical reaction. We know how we can say that chemical reaction has taken place. Now, next is types of chemical reactions. There are basically 4 types given in your NCERT. Combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction. By looking at the names, it's very easy. You can guess and you can give definition in your own words. Like combination, कुछ तो combine हो रहा होगा, है ना? Decomposition मतलब क्या? Break down होना, कुछ टूट रहा होगा. अब टूटने का मतलब ये नहीं कि कांच टूट रहा है, ये टूट रहा. Decompose, कोई एक compound elements में break down हो रहा होगा. Displacement reaction, कुछ replacement हो रही है, एक element दूसरे को replace कर रहा होगा. Double displacement हो रही है लेकिन double times, मतलब maybe 2 elements are replacing each other. Okay? चलो इनको एक एक करके अब डिटेल में समझते हैं. Combination reaction, where combination means combining. So where any 2 or more reactants, when they combine, for example, if I have a reactant A, I have a reactant B, 2 or more reactants, they combine and form one product, single product. Then we say combination reaction. चलो इसको और एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, देखो अब 2 हमारे पास क्या आ गए, रिएक्टेंट्स आ गए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. When these 2 reacted together, they form a single product, CaOH twice, calcium hydroxide, plus large amount of heat is released. अभी मैंने आपको बताया white wash करते हैं तो, right? तो this symbol of triangle is for heat. तो इस तरह के reactions यहाँ जहाँ हीट बहुत सारी या हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट साइड में, एग्जिट हो रही है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एग्जिट हो रही है ना प्रोडक्ट साइड से, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन का. व्हेन कोल बर्न्स 2 products, carbon and oxygen, and a single 2 reactants and a single product is formed, CO2. Now formation of water, बहुत ही simple example, hydrogen and oxygen, 2 gases are reacting together and one product, water, is formed. So here are other examples, you can go through it. Right? So here is exothermic reaction, reaction in which heat is released along with the formation of products. Exit हो रही है, products की side से heat आ रही है, निकल रही है वहाँ पे. तो this kind of reactions are called exothermic chemical reactions.
नाउ ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, चलो देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, कि जहाँ हीट रिलीज हो रही है, जैसे मीथेन, कोई भी गैस, नेचुरल गैस, जब भी कुछ आप बर्न करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट हीट, है ना, कुछ भी जलाओ तो हीट तो मिलेगी. Decomposition of vegetable matter. Now this is something important. Respiration reaction. Respiration reaction is also an example of exothermic reaction. जब आप respire करते हो, respiration process आपकी body में चल रहा होता है, तो heat is released in the form of energy. Like what happens during respiration? During digestion, food is broken down into simpler forms, right? What kind of simpler forms? Like carbohydrates. Then carbohydrates gets converted into glucose. Now this glucose, when enters into a cell, combines with oxygen and will give you energy. Right? So energy is given out. This reaction is known as respiration reaction. Clear? Okay. Next is decomposition reaction. Decomposition, breakdown होना, decompose होना. So decomposition reaction involves breakdown of single reactant into simpler products. Example, if I have a compound AB, reactant, one single reactant, it will break down into simpler product. तो opposite है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे. दिस वाज कॉम्बिनेशन, कंबाइनिंग हो रही थी. पर यहाँ पर डिकम्पोजिशन में एक सिंगल ब्रेकडाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है. तो दिस इज टोटली ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन. लेट्स सी एन एग्जांपल हियर. NaCl, sodium chloride, decomposes into NaCl, sodium and chlorine. Now there are types of decomposition reaction. For example, if I have AB as a compound and I am using heat here to decompose it into A and B. ठीक है, मैंने यहाँ पे heat use की है इसको decompose करने के लिए. तो this type of decomposition reaction is known as thermal decomposition. Thermal means what? Heat. Here is an example. देखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, then it will get decomposed into calcium oxide and carbon dioxide gas is released. Got it? So next is electrolysis. Electrolysis is, अच्छा यहाँ फिर से कोई example ले लो. I have a single reactant, it decomposes into A and B. Now instead of heat, here I am using electrical energy. I am using electricity. Now using electricity, you are decomposing this compound into A and B. So this type of decomposition reaction is called electrolysis. A very simple example of water. When you hydrolysis of water, breaking down of water by passing electricity into hydrogen and oxygen. Easy है ना? नाम से आंसर पता लगता है. Photolysis, photochemical decomposition. Now again, instead of this electricity, I am using what? Light. Let's say sunlight, I am using it for the reaction to decompose. So this kind of reaction where light energy is used for decomposing is known as photolysis or photochemical decomposition. These two are very important examples, been asked in exam many times. Silver chloride, it turns into grey in sunlight. Why? Because silver chloride, when kept in sunlight, it breaks down into silver, it decomposes into silver and chlorine. Next is similar type of reaction is silver bromide breaks down into silver and bromine. Now, this reaction is used in black and white photography. This is again asked. Write an chemical equation used in black and white photography. Now here you see in thermal reaction where we have used what? Thermal energy, heat energy we have used here, right? So here heat energy you are giving in.
So this type of reactions where heat energy is used are called endothermic reactions. So here we can say here, यहाँ एक चीज़ आप कर सकते हो कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस क्या है. एक्सो यहाँ एग्जिट हो रही है, मतलब प्रोडक्ट साइड में हीट एनर्जी इज रिलीज्ड. एंडो जहाँ एंटर कर रही है मीन्स जहाँ आप हीट दे रहे हो, रिएक्टेंट्स को हीट कर रहे हो, तब जाके आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा. सो दिस इज एक्सोथर्मिक, एग्जिट हो रही है. एंडोथर्मिक, एंटर हो रही है, आप दे रहे हो. ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को रिमूव किया और उसकी जगह लेनी. नाउ इफ आई हैव AB compound, it reacts with C compound and you get CB plus A. Now what happened in this reaction is this A is getting replaced by C, correct? CB. So replacement, displacement, this is called displacement reaction. Now here इसको और अच्छे से समझते हैं इस example से. Here you see an iron nail is dipped in copper sulfate solution. It is blue in color. And after some time what happens is this blue color changes to green in color. Why? Because you see in this equation, this Fe has replaced or removed copper from copper sulfate and taken its place. From copper sulfate, it turned into iron sulfate and copper separated. So here displacement took place. Now again here you can see in the second example, zinc when reacted with copper sulfate, this zinc, what it did? It replaces copper. Copper is removed and it took its place. It is displaced here. So from copper sulfate we got zinc sulfate. तो अब पता है कैसे लगेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, है ना? ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है भाई, दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि कॉपर ही हटाएगा जिंक को. तो फिर फॉर दैट यू शुड लर्न दिस सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज. दिस सीरीज इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. एज वी गो डाउन द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. नाउ लेट्स सी हियर. अभी ये जो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया इसी को देख लेते हैं. जिंक है, कहाँ है जिंक? जिंक ये रहा जिंक. और कॉपर का है, कॉपर ये रहा. तो देखो अगर आप सीरीज को देखोगे तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है भाई. जिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉपर बेचारा वीक है. तो जिंक ने क्या किया? स्ट्रॉन्ग है तो वीक को धक्का मारा यहाँ पर और उसकी जगह ले ली, है ना? चलो ऊपर भी ये वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. आयरन एंड कॉपर. वेयर इज आयरन? ये रहा आयरन. कॉपर बेचारा फिर नीचे है तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए उसने रिप्लेस कर दिया. तो दिस सीरीज इज, प्लीज लर्न इट, राइट? इफ यू नो द सीरीज देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे अब एक की जगह दो कंपाउंड्स के एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो रहे हैं. मान लो मेरे पास है एक AB कंपाउंड, इट इज गेटिंग रिएक्टेड विद CD कंपाउंड, और क्या मिला मुझे? CB प्लस AD. क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर देखो C ने ये दोनों आपस में डिस्प्लेस हो गए. A की जगह किसने ले ली? C ने ले ली. और फिर A कहाँ गया बेचारा? A ने C की ले ली. डिस्प्लेस हो गए दोनों आपस में. तो एक बन गया CB, दूसरा बन गया AD. यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा. Sodium sulfate when reacted with barium chloride. This is from your NCERT example. Now here what happened? Sodium और barium ने अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर ली. डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो सोडियम सल्फेट से मुझे क्या मिला? बेरियम सल्फेट. और बेरियम क्लोराइड क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड. सो डबल डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस. ईजी है ना? बस नाम को समझो और डेफिनेशन लिखो और इक्वेशन, एक एक एग्जाम्पल इक्वेशंस की याद करो. सिंपलर, इफ यू गेट सिंपलर ones, this is from your NCERT. If you need some simpler ones, you can write that also. Next is, other than these
4-5 reactions, we also have to learn precipitation reaction. We have already discussed precipitation in this earlier video. Any chemical reaction in which precipitation is formed is called precipitation reaction. Very simple. Precipitation is insoluble in water. We know this already. And this example also we know. Lead nitrate, when react with potassium iodide, we get lead iodide and potassium nitrate. Now this lead iodide is nothing but yellow color PPT is formed. Okay. तो आगे बढ़ते हैं. Oxidation and reduction. This oxidation and reduction reaction together is known as a redox reaction. तो पहले oxidation के बारे में समझते हैं. Oxidation नाम से it's very clear कि जहाँ पे oxygen add हो रहा है, where oxygen is gained. जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा. कॉपर, यहाँ पे कॉपर एक अकेला है. व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, क्या इसके साथ कंबाइन हो गया? इसने क्या गेन कर लिया? इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया. यहाँ पे देखो, इट गेन्ड ऑक्सीजन. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. गॉट इट? अब किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है? कॉपर के साथ जुड़ा है. इसलिए कॉपर क्या हो गया? कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया. तो जिसने अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ा वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया. एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो अगर इसको एक तरह से और याद रख सकते हैं आप कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज गेन्ड, और यू कैन ऑल्सो से द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज लॉस्ट, और द रिएक्शन इन विच द एलिमेंट लूजेस हाइड्रोजन. Chemical reaction in which substance gains oxygen or loses hydrogen. Any one way you can learn it. Okay, fine. Now, what is reduction? Reduction इसका opposite है. इसका मतलब उसमें क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन जो है वो लॉस करेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गेन हो जाएगा. तो substance which gains hydrogen or you can see loses oxygen. ऑक्सीजन के टर्म्स में याद रखो, ईजी रहेगा. ठीक है, जैसे यहाँ देखो, CuO when reacts with H2, what you got? You got Cu. Oh, look at it. Oxygen गायब हो गया भाई. Copper lost the oxygen. So this means reduction has taken place. और कौन reduce हुआ? कौन reduce हो गया? Copper reduce हो गया, क्योंकि copper ने अपने से ऑक्सीजन निकाल दिया तो वो reduce हो गया. ठीक है ना. अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा था? यहाँ पे कॉपर ने गेन किया था, इसलिए वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया. गॉट इट? नाउ लेट्स सी दिस रिएक्शन. लेट मी राइट इट हियर एंड एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली. CuO प्लस H2 विल गिव Cu प्लस H2O. अब देखो यहाँ पर Cu है. अब प्रोडक्ट साइड में ही देखोगे कौन गेन कर रहा है, कौन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, कौन ऑक्सीजन लूज कर रहा है. वो आप रिएक्टेंट साइड में नहीं देखोगे, इस तरफ नहीं देखोगे, प्रोडक्ट साइड में चेक करोगे. नाउ हियर यू सी CuO से Cu हो गया. क्या किया इसने? ऑक्सीजन को गेन किया या लॉस किया? लॉस किया. तो जहाँ पे ऑक्सीजन लॉस होता है वहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन, है ना. रिडक्शन हो गया. कौन रिड्यूस हुआ? कॉपर गॉट रिड्यूस्ड. सिंपल. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. सेकंड प्रोडक्ट आपका क्या है? H2O. अब ये H2O हो गया. अरे वाह, इसने तो ऑक्सीजन ले लिया, इसने तो गेन कर लिया ऑक्सीजन. सही है ना. तो जो गेन करता है ऑक्सीजन, उस रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन. सिंपल. और कौन ऑक्सीडाइज हुआ? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ भाई, वो तो लेके बैठ गया ऑक्सीजन. करेक्ट. चलो यहाँ पे एक और चीज़ समझाती हूँ मैं. सिंपल, वेरी सिंपल, कि यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हो गया, रिडक्शन हुआ. ये रिडक्शन किसकी वजह से हुआ? मतलब किसने ले लिया इसका ऑक्सीजन? H2 ने ले लिया. इस H2 ने ले लिया. तो H2 को हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट है. इसने उसको रिड्यूस कर दिया, उसको ऑक्सीजन ले लिया और उसको रिड्यूस कर दिया. सिमिलरली चलो अब ऑक्सीजन में देखते हैं. ऑक्सीजन में
हाइड्रोजन में ये ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन ये ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ? इसको ऑक्सीजन मिला, लेकिन किसकी वजह से मिला? Cu की तरफ वजह से मिला। अगर ये Cu यहाँ नहीं होता तो इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता? नहीं मिलता ना। तो Cu क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया ऑक्सीजन दे के, है ना। सिंपल है, समझ में आ गया? ओके, नाउ वी विल जस्ट मेमोराइज द होल थिंग व्हाट वी हैव डन इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन अ short column. Addition of oxygen is called oxygen, or removal of hydrogen from a substance is called oxidation or loss of electron. So any way you can write the definition. Similarly in reduction, addition of hydrogen to a substance, yes. Removal of oxygen from a substance, yes. Gain of electrons. So any way, any one of the definition you can learn, but better learn in the terms of oxygen. That will be easy. Like addition of oxygen here and removal of oxygen from here is called reduction in that way. Okay. So this is all for today's class. Let me give you a homework. Write down this equation. ZnO plus C, and the products we get is Zn plus CO. Now mark in this equation where oxidation is taking place and where reduction is taking place. Third, also write which element is getting reduced and which element is getting oxidized. And also write the name of the reducing agent and oxidizing agent. Oxidizing agent. Write these answers in the comment box. I see, if I take this one, CuO is getting reduced to Cu. Right? So like that, write who is getting reduced and who is getting oxidized. So that's all. In the next class, we will study how to write a chemical equation, how to balance it. Thank you.